How are we doing, all of us? Good, good. How about you? Good. Just a second, let me get to Facebook Live and then we'll start the call. And we all mute ourselves. We'll have to wait for a second. Actually, Facebook is taking its time too. Hello. Please keep yourself on mute. Please keep Good afternoon. I think the Facebook is not taking on today. Not a problem. Let's get back. Yeah. So hi everyone, and actually we were trying to go Facebook Live. मगर उसको तो अपने तरीके से चलना होता है, and I'm very happy with that too. So, how are all of you doing? What does the day get you here? Yeah, what is it that gets you here on call? And today I was thinking, what can we talk? Yeah. Anybody here with something that we can talk on? Nobody? Am I just on the screen or are people there? Yeah? सिर्फ मुझे लगता है ब्रेकफास्ट के बाद वाला एक वो है जिसे कहते हैं ना स्वीट डिश कॉल. हाँ तो बनी बनाई सब मिल जाएगी. हमें तो कुछ एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है. और एनी विच वे जो एक्सरसाइजेस देते हैं वो हम कभी करते नहीं क्योंकि कल फिर हो जाना है. कल तो फिर आ ही जाना है. Isn't it? That's so nice. So anybody with anything? No. It's a very usual thing, no? Nobody coming up with anything. Yeah. And when are we going to use our capacities? When? When will be? अगला जन्म नहीं आने वाला है. जिसको कलयुग का अंत कहते हैं वो अंत ही चल रहा है इस टाइम. कहीं सोचें कि फिर कुछ मौका आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है. इस खुशफहमी में मत रहिएगा. Yeah. Okay. So the quietness, it's not quietness actually, it is dumbness sometimes. It is not quietness. There's a very different energy of being quiet and being just not. It's not, and I'm very sure none of you is so blank. I'm very, very sure. Yeah. Yeah, even I've been like journeying through life, and I know that we are never thoughtless and we have so much inside us. And but the thing is कि effort कौन करे कम वक्त ना. ये बड़ी सारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है. effort कौन करे. Yeah.
एंड द थिंग इज कि जब सब कुछ पके पकाए मिल जाता है तो फिर एफर्ट करने की जरूरत भी क्या है, isn't it? तो बहुत साल पहले किसी से मिली थी तो उन्होंने कितनी अच्छी फ्रेज बोली, पता नहीं आज से 20-22 साल पहले, उन्होंने बोला जिसे जिसे मिले यूं वो करे क्यों नहीं. How intelligent could the others be when they get it all? And then, if I would like to have eat a cake and I get it baked, then why the hell am I going to work on it? But any which way, that's your choice. And today I was thinking that all of us, have you ever come up with a time or with a situation that you saw that you did not see that you had your back doors open? Yeah. And when I use the word back door, do you understand what is it? Yeah. Yeah. So what is that? Let's have it from you, and then I'll explain it to the others. What's a back door? Yeah. Yeah, Priya, since you nodded the head, that means you get the term. The others don't. So what is a back door? Yeah, in a very simple language, I would say it's like plan B for you, Okay. right? How would you explain a plan B? Yeah, that's what. So if, for example, if I'm heading towards plan A, that is what I desire, and then plan B is something which plan A, if it doesn't work, then I can turn around instead of going forward and then pick up the plan B and move into some other direction. So instead of going ahead with plan A itself, then I choose plan B, and that plan B is not taking me into the same direction, but I am taking a U-turn, probably taking another direction. That's a back door, as I understand. Okay, very good. That's nice. कोई और भी है? Somebody would explain what is a back door? नहीं. So अपने यहाँ हम लोगों ने घर में देखा होगा कि एक आगे से दरवाजा रहता है और एक पीछे भी रहता है ना? So अगला वाला दरवाजा रहता है कि गेस्ट को आना है, गेस्ट को जाना है, उसके लिए, और एक पीछे वाला दरवाजा रहता है जहाँ से सर्वेंट आता जाता है. You get that? और हम यहाँ पे in the energy field, when we talk about a back door, is definitely it's a plan B, as Priya very beautifully said. But why do I make a plan B? Yeah, and how do I make a plan B? How do we, or why do we? So if I say why do we, that's an escape route, maybe. Okay. Yeah, and that's how I choose to go for plan B, 1. And point 2, which comes up to me, is plan A is something which I am seeing and which the world is seeing me doing it. Plan B is like very, very secretive to me. And I don't want anybody else to see me, but I know I'm doing this. Okay, great. That's so nice. So ऐसा रहता है कि कुछ देर पहले, a girl came to me, a young girl, and she'd got married 2 years, and she tells me she'd come for a session, and she says that over the phone she told me that there is some relationship issue that she's going through, and the marriage is not doing great, and she wants to visit me. So I said, okay, please come. And when we got into the session, I asked her a few questions, and she says that I asked her, I said, is this the boy which you found for yourself? Is this a love marriage? She says, yes. And I said, it's been how long you know that guy? She says, 4 years. And I said, how long are you married now? She says, 2 years. So it's been 6, no? 4 years of their dating and 2 years of marriage. And then I ask her that, what is the issue now?
So she says that the issue is that somehow I realized that I'm not in the right home, and my husband is also, the guy that I thought that I'm going to get married is not that guy. Yeah. And Malvika ji, आपसे एक बात share करूं दिल की. When we got engaged, I had always been thinking that if our marriage doesn't work, then I'm going to run away. ऐसे सच में? बोले हाँ, I thought of a plan, that I'm just going to run away. If his mother doesn't behave well, if the family doesn't, do good, if he's not good to me, she had like 100 points. And, obviously, I'm a little naughty somewhere. And, I just started smiling as I always do. And then I asked her, I said, really? So she says that, I'd always had that in my head that something goes amiss and I'm just going to run away from the house. So I said, now what have you done? Yeah. She says, I've run away from the house. I'm not staying with him anymore. And it's been 2 months now, we're not together. Yeah. So I asked her, I said that, if I ask you a very blunt question, what was this plan B all about? There was a plan B, no? If the marriage doesn't work, I shall run away. The plan B is very clear. She says, no, to keep yourself sorted, and then where things you do not know if they're going to come out well or not. And then, how come you do not make a plan to fall back on? Get that? कि अगर ये चीज काम नहीं करेगी तो मैं फॉर्मूला 144 कौन सा यूज करूंगी जो कि मैं I'll be out of it. You get that? So now what happened is that all that while she was in her dating period and then she got married, the whole investment of energy was अगर ये शादी नहीं काम करी तो. इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी प्लान ए में कभी थी नहीं कि what can I energetically contribute to this relationship so that it blossoms. You get that? तो जब सारा टाइम एनर्जी ही उसमें इन्वेस्टेड रही कि ये काम नहीं करेगी अपन तब क्या करेंगे, तो फिर होना क्या था, जिसमें wherever the energy I invest, it starts growing in it. Is that not? And everywhere that we have planned in life, this example could be of a relationship. It can be in your job. It can be at home. It can be with your servant. It can be with your child. Everywhere that you have a plan B in your head and you are invested in it, you are spending more time in that plan B rather than in the plan A. Are you in this moment ready to at least see it like eyeball to eyeball? Yes, yeah, I do like this, or I have been doing like this, or in that particular incident or episode that happened in my life, that is what I was doing. You get that? So whenever my back door is open, I have an escape route. Yeah. So like we have lifts in all the buildings and they say if there is a fire, please walk down the stairs. Yeah. So that's the plan B which they give you always. Yeah. That is how we keep creating our lives and different episodes in our lives. And that is how we keep creating circumstances. Yeah. And the circumstances which I create, I have to go by them. I like or I do not like. Yeah. But then how do I create these? There are 3 things with which I create anything. There's 3 things. The first thing is the word. Yeah. The words that I use, they make me create a life. Okay.
Because where are the words coming from? My thoughts, isn't it? So the thoughts are giving me words, that is expression. Yeah. And what is the third thing that I do? Action. These are the three things. Yeah. So what is it? What kind of words do I have? I have words which are positive. And then I have two categories, no? I have words which are positive, and there are words which are negative. Yeah. So if I say sadness, you know, it is a negating word. If I say irritation, it's a negating word. If I say jealousy, it's a negating word. Yeah. And when I use, happy, abundance, joy, peace, calm, expansion, these are positive words. Is that not? Now, when I use any word, yeah, what is the thought associated with it? How do I take all of you through the meditation? Is that not? Your eyes are closed, you're not seeing anything. Yeah. The words are giving you a thought. They're creating a thought in your head. Yeah. And what is that thought giving you? It's giving you a feeling. That is calmness. That's all that we are doing. Yeah. And how is it that my words, my thoughts, my words, and the actions that I do, how do they create the episodes and the circumstances and my entire life? How is it? Yeah. So everywhere that we have been making plan Bs with the words, with the thoughts, and then with the actions, what are we doing? We're going to actualize it. No, we are actualize. उसको हकीकत बना लेंगे अपने सामने. So वो आपके सामने एक केक बेक होके एकदम आइसिंग लग के एकदम प्लेटर पे सामने आ जाएगा. और वो क्या है? मेरे हालात. Yeah. So have any one of you been doing this thing in your life? Plan Bs. Yeah. Anybody here with a plan B? पहले किया हो 10 साल पहले 5 साल पहले आदत है. Yeah. Please do not be a blank screen for me. It's not really very inviting for me, no? Yes, Malvika, for me, it was always there. Be it any action of mine, be it into my business, be into my studies, be into my course, be into my, relationships, be in whensoever I just get into pleasant of something which I really ask for from the universe, which I'm actually creating कि मुझे business में ये चाहिए, मुझे relationships में ये चाहिए, वो जब मिलना शुरू हो जाता है, then the doubts, that insecurity, that all the things pop up, and then I cook plan B in my head. अगर ये चीज ऐसे ना हुई तो. So when you were sharing, so I could actually see that everywhere I have a plan B, I have an exit point, and I am investing my energy that too in terms of insecurity, in terms of doubts, in terms of, not even putting my energy into the harmonious of all the things. I'm putting my energy into something else. If it doesn't work, then it will be my thing. I'll do that. And then after few weeks and after few months, that thing only popped up. Which you said, the cake was actually baking and it came into the platter after long, say few weeks, few days, few months. So वो plan A तो कभी fulfill हुआ ही नहीं, because उसमें शायद वो energy with heart नहीं थी that this is the only beautiful thing I have in my life. So it's happening with me everywhere. In my thoughts, I'm cooking something or the other. Even in my daily routine of small, small things, not waking up on time, which I thought of, lingering on my schedule, everywhere, it's happening. Okay. Okay. So with that plan B, what were you actually facing? So that plan B is actually not harmonious and empowering.
that is full of doubt and the feelings of, unpleasantness always, because that is created out of fear and doubt, right? So Okay. plan A was already happening with the harmony things. So plan B जब cook होके आता है तो I'm disempowered, I'm sad in myself because that is what I really don't wanted. I created out of doubt and fear. But if something good is not happening, तो फिर ये होगा तो I'll do this. So that is not actually empowering. That is taking my life away from me only. All the blessings which I was getting, I'm putting that onto doubt, and I'm just after that I have to live with it until and unless I change my energy again. So beautiful. Thank you for sharing also. Yeah. और मुझे लगता है सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन वो रहती है जब हम इतने सारे लोग स्क्रीन पे रहते हैं और उनके सामने कहते हैं कि यार मैं बहुत सारी बेवकूफियां करती आई हूँ, isn't it? Yeah. And I really appreciate people who can talk about themselves. Yeah. I took a good time talking about me. It was very hard initially, very hard. Yeah, you like to be like the best of best. People don't know you. Yeah. तो कभी मैंने कहीं सुना था कि एक्चुअली जिंदगी में और कुछ बनने की जरूरत ही नहीं रहती है. You get that? Yeah. चाहना हमारी क्या रहती है? मैं ओपरा बन जाऊं, मैं डॉक्टर वेन डायर बन जाऊं, मैं प्रिया बन जाऊं, मैं मोनिका बन जाऊं. और बात ये है कि बस तुम्हें ही बनने की जरूरत है, ओरिजिनल. यू गेट दैट? और उसके लिए कितना तुम्हारे कंधों से बोझा चले जाता है तुम्हारे को. डू यू नो, जो मेरी जिंदगी की हकीकत होगी उसको मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे 1000वीं बार भी सुनाऊंगी ना तो मेरी जिंदगी की स्टोरी नहीं बदल सकती है. कितनी अच्छी चीज है. इज दैट नॉट? एंड द थिंग इज बिकॉज मेरी जिंदगी की स्टोरी नहीं बदल सकती है, इसलिए मेरा कंटेंट जो है उसकी एनर्जी नहीं बदलती है. Why? Because I've lived through it. Yeah. And the best part is I don't have to make over foundation लगाने की जरूरत ही नहीं है ना. You're just good as you are. सिर्फ ये रहता है उसमें, एक फिक्र ये रहता है कि आपको कितने लोग अपनी जिंदगी में से रिजेक्ट कर देंगे. Yeah. But मैं अपनी, I will, we were talking to Vinesh and we'll definitely get back there. I'll tell you about me. When you see one person go away from the group, yeah, somebody deleted themselves from the group, yeah, and do you know, even today, you do not like it. Yeah, I'm talking about me, and I'm talking about just 2 days back thing. Yeah, but today the difference is, I'm telling you what is the difference. The moment I see somebody deleting themselves from the group, the first thing which comes is, well, is there anything wrong about me? That's the first thing, first reaction. Okay. And now what the change I see is that I'll not like it, and the very next breath would be, what are you not liking in this? Okay. And क्योंकि जब तक बात की पूंछ नहीं पकड़ोगे ना, कभी बात तक नहीं पहुंच सकते हैं. ठीक है. तो जब हम ये अपने पूछे ना, आपको एक्चुअली मुझे क्या नहीं अच्छा लगा, so नहीं ये अच्छा लगा कि fear of rejection अभी भी है कहीं residual. Get that? And then when I eliminated and did my practice of tools and eliminated that fear of rejection, might be I did it a million times and it just goes away. You get that? But the first thing is the fear of rejection. Yeah. And then noticing, हाँ ये है यार, अभी भी है, 100% नहीं गया, मैं बहुत better हूँ, मगर अभी भी है. Yeah. And then you catch the bull by the horns, then you use a tool or 10 or 20 or whatever you do about it, and you are, you do away with it. So that's the beauty, no? That is the beauty.
that yes, today, even after doing all that, even after investing so much, and then actually being invested just in you, the entire day, 24 hours, you still are not perfect. Why? Because none of us can be. You get that? All that I can talk about is I'm better than before. Yeah. And I'm each day, each moment, I feel I'm better than before. And that is what keeps telling me, talking me about the graph that I am at. And that is telling me that, I'm on an upward graph. That's all what is required. Yeah. And like Venetia was saying, yes, it's a pattern that I always am invested in that. And then what is the beauty of being invested in the plan B is that I get to create it. जो चीज मैं तहे दिल से नहीं चाहती थी वही क्रिएट कर लिया, या वही क्रिएट कर लिया, और वो इतना फोटो फ्रेम में इतना जबरदस्त फिट आया जो फोटो फ्रेम मैंने क्रिएट किया था. वो फोटो फ्रेम आपने सिल्वर का क्रिएट किया था, वो 5x7 था, वो 7x9 था, वो गोल्ड का था या वो प्लैटिनम का था. जो भी हमने फोटो फ्रेम क्रिएट किया उसमें हमारी वो पिक्चर जाके एकदम सेट आ गई. You get that? So then what do we, that is why, what do you want? You have to keep asking, what do I want? What do I desire? Okay. And suppose, just as an example, if I say, I desire to have the most amazing relationship in my life. Okay. And that relationship could be with my son. Okay. And then at the second point, what do I do not want in this relationship? That is disharmony. Okay. So what am I clear? What do I want and what do I not want? Yeah. So then each time when again that do not want comes up in front of me, I again shift from, Malvika, what do you want? I have to remind myself, no, actually, what do you want? I want to have harmony. So I always have to shift my energy from the disharmony to the harmony. Again, it will go. Again, I'll have to pick it up. And is that not? Yeah. What more can you do to close your back door for all times to come? And mind you, I've observed anything which I have, yeah, suppose if I have a pattern of always keeping my back door open, then what happens is that I will have this in every sphere of my life. वो पढ़ाई होगी, रिलेशनशिप होगा, सर्वेंट होगा, हस्बैंड होगा, पैसे, हर चीज में मेरा वही पैटर्न रहेगा. And that is why all of that comes together and I feel disastrous. Yeah. Yeah. So everywhere that I always go to the space of what I do not want, and then I start spending my energy on that. Will you just get yourself back and keep asking, what do I want? Yeah. And then what am I doing for that? What am I doing for that? What am I doing for that? And for that, I will use the right kind of words and then think the right kind of thoughts and then do the right kind of action. And then I create that cake. Yeah. But it's not that in the whole journey, I will not get back to the disharmony. वो मेरा बहुत पुरानी practice है. फिर वहां जाने की अपने को बहुत जबरदस्त आदत है ना? और फिर कौन अपने को इस उम्र में कान खींच के फिर वापस ले आएगा? मैं ही तो मुझे लेके आ सकती हूँ वहां पे. Yeah. And that is when I always keep asking, what do I want and what am I being invested in? What do I want and what am I being invested in? Yeah. And the same thing when I told that girl, she said, thank you. I never ever thought कि यार इतने साल मैंने togetherness पे तो कभी invest ही नहीं किया. When we'll be together, what kind of a house we'll have, what kind of a relationship we'll have, what kind of a companionship we will enjoy. Yeah. I was always invested. If his mom doesn't behave like that, I'll do this. If his father doesn't behave like that, I'll do that. You get that?
How draining can that be? How draining can that be? So everywhere that we have drained and everywhere we have not been able to catch ourselves, yeah, and everywhere that we have not taken to silence to catch ourselves, because sometimes, when you are in silence, you get to know what is the pattern. Yeah, you get to know what is my pattern that I keep repeating and keep doing, and it happens to me in a million ways, and I still get back to the same thing, and then I feel so dejected and disastrous, and I feel so horrible about my own self, that why do I create these kind of messes again and again? Yeah. So in this moment, we can always choose kindness. And in that kindness, we can always get to the silence. And in that silence, we can always get to the issue, that is, what makes me do so? Yeah. And I've seen there are homes where plan Bs are really discussed. Yeah. And how is that discussion happen? If the child does not get into IIT, then he's going to get into some other college. Yeah. And then what would that college be? You get that? There is no harm to a plan B. Again, asking, are you fearful that your child will not get through? Or is that just a plan B to secure the year? Have to be very clear. Yeah. And if I'm operating from fear, he's going to lose it. He's definitely going to lose it. He's definitely going to lose that seat of IIT. Yeah. But if I am just, to secure that 1 year, I am doing that. And sometimes, even that plan doesn't work because God has something more. Yeah. So I have a young son, he's in Mumbai now. And what was it? There was such a big shift that he made. He really is very good at what he does. And he took 2 years of coaching, went to Delhi, and getting admission in Delhi University is just not simple. And he could make it. He was a topper, got through the institution, went there, topped the semester, got selected for Paris, went there for the winter school. And when he got back and got back home for 2 days, and he tells me, "Mom, should I tell you something?" I said, "What?" And he tells me, "I do not want to do this." And I said, "Okay." And I said, "Are you very sure about it?" He says, "I am very sure about it." Yeah. In 6 months, I really realized that this is what I do not want to do. And he's always been into, filming and photography ever since he was in class 8. Yeah. So I said, okay, that's so good. And obviously, for these decisions, you're not always appreciated in the family. Yeah. But any which way, I've been a crazy person all throughout. So I give that binge to him also, that not a problem. Even if I'm crazy, I can really get to understand where your craziness comes from. Yeah. So I'm the root cause. So not a problem. And then 5 months he was home. And then, and then imagine, we looked for film colleges, and there were hardly any undergrad colleges here in India. And he had done the entire recce of the thing, and he says, "Mom, no, I have one. It's a very nice one. Subhash is Whistling Woods in Mumbai, in the film city." And he says, "Will you like to go through the website?" And both of us, we went through the website, and I see that there are 140 seats there for entire India and abroad. Children can be appearing from everywhere. And I told him, I just laughed. I said, "I hope, son, you know that we are not from the quota." Yeah, he says, "Yes, I know, but you don't have to worry on that." So no, any which way, I'm not worrying. And uh, how he appears for the exam, and when he delivers the exam, the interview, he knew the seat is his. That's for sure. Get that? So it's not that you do not like things can go haywire from your plans, and probably that going haywire is the best that is happening. You get that? But how many of us are actually ready for that? Actually, very few, very few. Not even 5%. It's just 0.1 who's ready for that. Yeah. And if
by mistake, or as luck would have it, if it comes your way, then what is going to happen to you? You have to ask yourself. Yeah. That thing as surety is nowhere. Surety is nowhere. It's not even in this moment. You get that? And everywhere that we are always desiring surety, 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 you know. Have you heard the word figuring out? I'm figuring out what will I do, you know. I'm figuring out what is the best thing. And it takes an entire life and you never get to figure out anything. Yeah, because we are not capacitated to figure out anything. God has kept many things to himself. If he would give all the powers to us, probably, you know, we're going to make him turn nuts. Yeah, so that power he's kept it to himself. That nobody on the planet can turn me nuts. Yeah, so you are nutty, you be nuts, and you keep enjoying being nutty. Yeah, and everywhere this talk of mine takes you to, yeah, and everywhere that you're connecting to this talk, to the call, everything that is getting you together, yeah, there's some joining of the dots that's happening. Yeah, what would it take for you to at least recognize those dots? And yes, these dots are, it could be just the three of them, 1, 2, 3, just coming together. Yeah, and wow, I could get something. Yeah, so out of my story, what all I've been doing and how I've been creating my life, and everything that does not allow you to get even that, you know, just 2 steps closer to you. Would you now like to eliminate all those walls, all those levels of understanding which you had? None of the levels were wrong. Probably that level was required for us to come to this level to understand something more. Everything that comes to us is just a stepping stone to go forward. That's it. Everything. Yeah. Sometimes the path is straight, and sometimes there are, you know, loads of stones, and sometimes it is like the upward trail, and sometimes it is downward. That is all. And sometimes mountains do turn rocky too, but it is just a stepping step to go forward, a stepping path, yeah, a stepping way. And any questions? Yeah, I any have one questions here? question, Malvika. What's the time left? I have one question, Yeah, Malvika. yeah, sure. Like you were talking about your son, Ji. he got clarity after some time, you know, having admission Yeah. in good school, good college. Still, he got clarity, and you really helped him out in any which way. My question is, what if someone is, you know, वो wanted and unwanted के बीच में जो घूम रहा है ना? अब बच्चे को क्लैरिटी आई है ना, एंड बाय द गॉड ग्रेस आपको भी क्लैरिटी आई, नहीं तो ज्यादातर पेरेंट्स वो क्लैरिटी देते ही नहीं है. बच्चा ऐसे इस तरीके से इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से आके बोले कि भी मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आजकल जब हम आसपास देखते हैं, इवन इंक्लूडिंग अस, वो कहते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम बर्बाद कर दोगे, फलाना ढिमकाना, जो कि एक स्टोरी है हर जगह सुनने को मिल जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम. आपके वाली स्टोरीज बड़ी कम मिलती हैं, एंड I am lucky to hear about this, and you are also lucky that at least you got clarity about your kid. That I really appreciate. So what if बच्चे को क्लैरिटी नहीं आ रही है, पेरेंट्स को भी नहीं आती है, या वो पहले से अपनी लाइफ में इतने कंफ्यूज हैं कि वो बच्चे को भी वो क्लैरिटी दे नहीं पाते हैं, एंड द सेम थिंग इज गेटिंग बच्चा आल्सो. सो देन व्हाट शुड, लाइक आपने पहली भी स्टोरी में, आई एम को रिलेटिंग ऑल दिस, कि इतना टाइम ही नहीं होता, हम अपने आप पे इतना टाइम ही नहीं इन्वेस्ट करते कि हम अपने आप से बात करें, भाई तुझे चाहिए क्या, और भाई तुझे क्या नहीं चाहिए. प्लान बी तो हमेशा रहता है. Although I am not the person which always go with plan B, but वो plan B देने वाले बहुत होते हैं. आप नहीं भी सोच रहे हो तो दूसरे वाले सुचवा देते हैं, अरे भाई तुम ये कर रहे हो, अगर ये हो गया तो, है ना. तो वो प्लान ए प्लान बी, तो प्लान बी ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है. उसके बाद आप अपने पर इतना टाइम ही नहीं इन्वेस्ट कर रहे. जैसे आप कह रहे हो ना कि आप अपने आप से पूछो
कई बार मुझे लगता है हम इतने अपने आप के लिए काइंड, जैसे हम लास्ट टाइम भी कॉल में बात करते, इतने कंपैशनेट ही नहीं है अपने लिए कि हम बात करें कि भाई तुझे चाहिए क्या, 40 साल की होने वाली हूँ, यही नहीं समझ आई चाहिए क्या, है ना। और वही सेम चीज आप बच्चों में भी देखने लग जाते हो। ऑब्वियसली आई ऑलवेज सी द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर्स, चाहे वो मेरी है चाहे मेरे हस्बैंड की है, बच्चों में आप देखते हो ना। आप शुरू से कहते हैं तो बिल्कुल माँ वर्गा लग रहा है या बिल्कुल प्यो वर्गा लग रहा है, एक्चुअली दैट इज देयर। सो वो लर्निंग कैसे आती है कि जब एक आप वांटेड और अनवांटेड में डिफरेंस कर पाते हो, और जानते हुए कि प्लान आप, इसी में मैं सॉरी मैं बहुत कंफ्यूज, शायद मैं कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है। तीसरी चीज मैं एक और दूंगी। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ माय नीज। लाइक 2 years बैक मैं देखती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने, मतलब मेरी सिस्टर की बेटी की बात कर रही हूँ, उसके पेरेंट्स ने, सब ने उसको कह दिया कि तुमने MBBS करनी है, तुमने यही करनी है, तुम एग्जाम दो। एंड शी वाज वेरी क्लियर, शी वाज वेरी क्लियर, मुझे US जाना है, US में ही करनी है। फंड्स नहीं थे, सोच नहीं थी ऐसी भेजने वाली, सब तरफ से प्रेशर था। इवन उस बंदी ने, उस बच्चे ने एग्जाम तक नहीं दिया, कहती मैंने देना ही नहीं है इंडिया का एग्जाम। He was so clear in her mind and she achieved that. फंड्स भी आ गए, कैसे आए कुछ नहीं पता। मैं आज भी उस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि जब आप चाहते हो, तुम्हारी वो क्लैरिटी होती है, तो रब, नेचर सब हेल्प करते हैं। वो बंदे भी जो आसपास आपको ना कर रहे होते हैं ना, वो भी पैसे लेके आए थे, कोई नहीं चलो बच्चा कह रहा है तो कर देते हैं। So with that wantedness and that clarity, how will that come? Even asking again How and will again. that come if I ask you the same thing? If I ask you the same thing, how will this clarity come? To invest time with yourself, to be kind with yourself. Amazing. सबसे पहली बात है कि हमें ये पता रहता है कि जो हम रहते हैं, मुझे किसी ने अरसों अरसों पहले, पता नहीं ये 30 साल पहले की बात कर रही होगी, मुझे किसी ने कहा था कि जब आप अपने पे इन्वेस्टेड रहते हो ना, जब आप अपने पे इन्वेस्टेड रहते हो ना, बाकी की सारी चीजें ना कायनात पूरी करती रहती है। ठीक है, क्यों ना, क्योंकि आज तक अभी तक यही नहीं पता चला मेरी पर्पस क्या है लाइफ का। क्या मेरा पर्पस डॉक्टर बनना है? क्या मेरा पर्पस एक मदर बनना है? क्या मेरा पर्पस एक वाइफ बनना है? क्या मेरा पर्पस एक इंजीनियर बनना है? पर्पस क्या है मेरा, पता ही नहीं है ना। यू गेट दैट? सो दैट थिंग, और ये चीज मुझे लगता है कि मेरे पर ऊपर वाले की एक बहुत ही एक अपार की मेहर रही है शुरू से आज तक, और हमेशा रहेगी, कि जब भी किसी ने कुछ अगर कहा, उसको जिसे कहते हैं ना अपने पल्ले बांध लिया, अपने पल्ले बांध लिया कि ये चीज मुझे करनी है। See, being invested in yourself is a very tough game to play. Yeah. Yeah. And people will make you wrong in a very brutal way. Yeah. Yeah, please hear me out. People will make you wrong in a very brutal way. शायद आपका साथ देने वाला एक भी ना हो, ये भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, मगर बात ये है कि आप क्या अपने साथ हैं कि आपको पूछते रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये है ना, दिमाग का दही बनाने के लिए तो सारी दुनिया आसपास इकट्ठी हो जाएगी, उनके रूप अलग अलग होंगे और रिश्ते भी अलग अलग होंगे। ठीक है ना, और वो अपना दही तो पहले ही बन रहा होता है। बात ये है कि when I am not there with my own self, then when what people say, it starts influencing me somewhere. Okay. Pardon, and then the clarity that you are asking. Pardon, could you please repeat that line again? I don't know what I said actually. When you invest your... I said when you invest in yourself, then whatever people might be saying or doing,
Okay, you do not become the effect of it. Yeah. Yeah. Hmm. And when you do not become the effect of it ना, तो आप react करना बंद कर देते हो. और That is react कैसे करना बंद कर देते हो? उनको justify नहीं करोगे. नहीं मैं तो ये सोचती हूँ ना क्योंकि ये इसके लिए ठीक होगा ना. नहीं but you know this that well you know problem. You get that? That is how I justify. Yeah. Then what will I do? I will listen and I will just put it in my system and I'll just be silent. Yeah. And then somebody else said, and then why? Because I have a silent time which I give myself. And in that time of silence, I actually get to sieve all the thoughts that I have gathered from 100 places. And then वो sieve जो है ना वो ऐसे अंदर automatically fit है. वो sieve से वो सब चीजें निकल जाती हैं और जो चीज मुझे चाहिए होती है वो फिर वहीं आ जाती है. और फिर मुझे अपने आप में शांति दिखाई देती है. Yeah. और सबसे पहले बात ये है कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आपके बच्चे को क्लैरिटी कहाँ से आएगी? हमारे हर घर में एक रोल मॉडल रहता है ना? या हम अपनी माँ को बना के रखते हैं या अपने फादर को या किसी और को भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है. ओके, व्हाट इज दैट रोल मॉडल डूइंग? All that person does, I just keep picking up on that. I don't do, I just keep picking up on that. Okay. But Yeah. I start utilizing it when the time comes. When the time comes, I start utilizing it. And suddenly I realize, oh, you know, my mother used to do that way, you know, when I was a child, I've seen her doing that. You get that? Yeah. Now, what is it? When I am confused as a parent, and I'm the role model too, luckily, unluckily, I'm at home. What do the children pick up on me? Confusion. Yes. Yeah. So I am confused, they are confused, both of us are confused, confusion बढ़ गई. बिल्कुल. है ना? So दोनों में से एक का आईना थोड़ा अगर बेहतर साफ होगा तो दूसरा भी जब आपके सामने से गुजरता है ना उसको कुछ क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है ना? तभी आपको आपके चुनिंदा से फ्रेंड्स रहे, चुनिंदा से लोग हों 4-5 जिनका थोड़ा जो अपना आईना रोजाना से साफ करने में इन्वेस्टेड रहते हैं ना, तो ऐसे लोग आपके लिए बहुत ब्लॉसमिंग रहते हैं. बिल्कुल. क्योंकि उनसे आप बात नहीं भी करेंगे ना, उनके सामने आने से ही आपकी स्लेट साफ होनी शुरू हो जाएगी. You get that? And you'll feel better about yourself. You will just get an answer which you were looking for. Okay? You will just get something, some level of awareness, something which you were desiring. Yeah. So sometimes what we keep doing is we love to have lots of people around us. You know, मुझे लगता है मेरी जिंदगी जो है ना बहुत हरी भरी है. It's very good to be social, but it's very important for me to know who is going to show me my place. It's very important, na? It's very important. So the moment आपका आईना साफ होना शुरू हो जाए, ये हम कैसे कह सकते हैं कि यार अगर अपने साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, मुझे बताओ अगर मुझे अपने साथ वक्त बिताने में कोफ्त है, मेरे पास है तुम नहीं, मेरे साथ कोई और तुम्हारे साथ बिताने में, तुमको मेरे साथ बिताने में क्यों भाई प्रॉब्लम नहीं होगी? Just give me one good reason for that. Yeah. Okay? Only when I love my own company, I love to be invested in myself. I love spending time with me. You know, and when I spend my time with myself, then I know about my flaws also. I know about my weaknesses also. Then I can work towards them. Then I can get clarity on them. And then when I am clear, then obviously कोई मेरे से कुछ पूछता भी है तो मैं अपने लेवल से ही बता सकती हूँ ना, आप दूसरे के लेवल से तो नहीं बता सकती. True. So look, you know, be invested in yourself. Yeah. क्योंकि पता है क्या है, कभी तो चिकन अपनी जान ले लेगा और कभी हम चिकन की जान ले लेंगे, है ना? ठीक है. तो हम सारा टाइम खाने पीने, परोसने, सजने संवरने और घर में नहीं लगा सकते. I'm not saying that is not important, but I'm saying कि मैं मुझ पे कब वक्त लगाऊंगी.
मतलब मुझे ऐसे लगता है, अगर मुझे लगता है कि कल आने वाला है, तो दैट मीन्स आई एम वेरी श्योर कि आज ऐसे भी चला जाए तो ठीक है ना? तो श्योरिटी नहीं है कल की. लेट्स डू इट नाउ, नॉट टुडे, जस्ट नाउ. लेट मी बी देयर नाउ. No. Get it? And then you do it for you just 7 days continuously, and the 8th day you will find a difference. Okay? And people will keep giving not plan Bs, they'll give you plan Zs also. They will not affect you. You get that? Because you know, there is something very beautiful which the God has gifted us. उसको कहते हैं smile. है ना? तो लोग बहुत कुछ कहते हैं तो हंस दो ना. है ना? So वो भी मुझे लगता है ये भी skill set है. Not True. mocking, A not very nice mocking at anybody. Never mocking at anybody. You know, just smiling because you are aware. Just smiling. That's it. Yeah. So everywhere that you do not allow yourself that kindness and that level of kindness which is required for you, and that'll be again getting back to you. That'll be again getting back to the true light within you. Yeah. That light is a light of guidance. You know, that will actually show you which door to open when. Yeah. Yeah. And that will actually tell you when to close that back door also. कि अब हो गया यार टाइम, सारा टाइम अगर वहीं रहेंगे तो फिर ये फ्रंट डोर की जो इतना खूबसूरत, हम घर का फ्रंट डोर कितना खूबसूरत बनवाते हैं ना, उसको कारपेंटर लगवाएंगे, उसके सामने गमले रखेंगे, उसमें गणेश जी सजाएं, यू नो, उसका फिर कब उस दरवाजे को बनवाने का फायदा ही क्या है जब उसको कभी खोलना ही नहीं है ना? Yeah. क्या फायदा है उसका? है ना? फिर तो पिछला वाला ज्यादा सुंदर बनवाना चाहिए था. अगर बनवाते हैं हम अगला ही है, बनवाते हैं हमेशा अगला ही है सुंदर. सो एवरीवेयर, you know, see, we are always playing a dual game with our own selves. Why we play, we don't know. Why we play, we don't know. बाहर वाली चीज, अपना घर बाहर से सुंदर लगना चाहिए, है ना? अंदर चाहे कुछ भी हो रहा हो उसमें. Yeah, so everywhere that we are always invested in the outside, not knowing actually मेरे अंदर क्या चल रहा है. और हो सकता है कि कई बारी अपने अंदर भी महाभारत चल रही होती है, तो उसको भी ऑनर कर सकते हैं कि हाँ यार, इस टाइम नहीं, आई एम नॉट इन अ गुड स्पेस, हो जाऊंगी, मगर उसके लिए वक्त है शायद, और शायद कुछ चीज हील करने के लिए वो हलचल है. और वो महाभारत भी अच्छी है, क्योंकि महाभारत भी सारा टाइम तो नहीं चली थी, कभी तो वो रुकी थी, तो वो रुकने का भी एक वक्त होगा जरूर. So everywhere that I do not give myself time to heal, to deal with my inside, to give me clarity. Everything that brings up for you, are you in this moment ready to eliminate all of that, please? Yes. Thank you so much for the question. I hope I could make some sense out of it. Yes, you always. Thanks for the pleasure you are. Thanks for the company you are in our life. Thank you so much. So much. Yes, guys. Yeah, you want to say something, Manisha? Yeah, bolo. Malvika, इसी चीज का I wanted to get an extended version. Like in my case, if I see my life, so I always get what I really wanted. उस चीज की शिद्दत से मांगा था भगवान से in terms of my studies, my career, my business, my relationships. Whatever I got the exact thing. मतलब 100% as it is, right? But when I got that, in terms of my fear, I created my plan B. I didn't get you. I didn't get your part. Yeah, whatever I wanted, I get that. Yeah. And when I got that thing, and those things started initiating in my life, you know, in terms of my fear आ गया. yes, तब fear आ गया, है ना? yes, and then plan B create कर लिया in my mind, even in my daily habits as well.
it's my pattern. If I would talk about, I don't know, is it a regular pattern or what? But वो fear ना अभी जैसे आपने बोला fear of rejection और fear of insecurity, you know, और the overthinking, वो cooking करने की आदत है जो बहुत ज्यादा. So those were the things, because वहाँ पे conflict नहीं रहा कि मुझे चाहिए क्या था, वो बहुत clear था हमेशा से, और शायद तभी वो चीजें मिलती रही. But now वो मिलने के बाद वो fear आता है. So for that I really wanted to work on to myself, because I got to present now कि वो fear आता है. Now it's time to overcome that with the acceptance. The question is really beautiful, and I do not want to hush up whenever I take anything. Can we take this part of the question tomorrow and elaborate on that? Yeah, because it's already 12:57. I'll not be, or we'll have to miss the meditation, which I do not want to. Yeah, that's something I think it's therapeutic. We need to go to that, and we'll definitely honor this question tomorrow only because it's a connected thing. Yeah, sure. Thank you so much. Thank you. Yeah. So let's come to our lovely meditation time, a time that all of us look forward to. Let me just put on some amazing music. And और आइए इन खूबसूरत सी शुभ घड़ियों में अपनी आंखें बंद करते हैं. और ये हवा का एहसास, हमारी सांसों का अंदर बाहर जाना, और इन सांसों के द्वारा हमारा मजा लूटना, हमारी इंद्रियों का मजा लूटना. और कैसे है कि अलग अलग वाकया मेरे जिंदगी के, जो मैंने खुद से घड़े और बनाए, और आज इन शांत घड़ियों में मेरे सामने कुछ सहजता से, कुछ आराम से, मेरे सामने आते हुए मुझे उन्होंने बताया कि मैं अपनी जिंदगी के वाकया कैसे बनाती आई हूँ. उन घड़ियों में जब रिश्ते कुछ अच्छे ना थे, सबसे पहले अपने से रिश्ता और फिर दूसरों से, तो लगता था कि शायद सब गलतियां दूसरों की ही हैं, या शायद मेरी किस्मत की. मगर आज समझ आती है कि किस्मत इस शब्द का सहारा लेते हुए मैं सारी उम्र इतने साल आगे आ गई. जब मुझे अपने को देखने की कोफ्त होती है, तो सबसे आसान तरीका मैंने पकड़ा, वो था किस्मत की लाठी का. जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर डगमगाते हुए चलता है, तो कोई उसे लाठी का सहारा आकर दे देता है. वैसे ही मैंने इस शब्द किस्मत का सहारा सारी उम्र लिया. किस्मत तो बहुत अच्छी है,
और बहुत अच्छी थी भी, पर मेरी नजरों का धुंधलापन, कमबख्त इतना गहरा था कि मुझे पता ही न चला। ऊपर वाले के मास्टर प्लान मेरे प्लान से कहीं मिलते नहीं थे, या मेरे प्लान ऊपर वाले के प्लान से, कुछ भी कहूँ। तो जब मेरा प्लान उसके प्लान से नहीं मिलता था तो मैं प्लान बी बना के बैठ जाती थी। सोचती थी पिछली संकरी गली से कहीं और चली जाऊंगी। आज सोचती हूँ उस संकरी गली से मुझे जाना कहाँ था और जा सकती कहाँ थी। यहाँ से अमेरिका चली जाती, या अमेरिका से कनाडा, कनाडा से न्यूजीलैंड चली जाती, या न्यूजीलैंड से कहीं भी और। मुझे तो मेरे साथ ही रहना था, उससे कहाँ भागने की कोशिश में मैं सारी उम्र लगी रही। हमारे प्लान बी होते क्या हैं? अपने से भागने की एक और आइडिया, और आइडियाज में हम कितने ज्यादा एक्सपर्ट हैं। सिर्फ फर्क ये है, ये आइडिया मुझे ज्यादा देर कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाता। ये आइडिया मुझे अपने से बहुत दूर लेकर जा रहा है। मगर इस आइडिया में मैं इतनी मशरूफ रहती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि जो मेरे लिए प्लान बना हुआ है वो सबसे बढ़िया है। इतना खूबसूरत, इतना सुगंधित, इतना अनमोल प्लान मुझ में बनाने की काबिलियत ही नहीं है। अगर ये मैं आज से कई साल पहले जान जाती और फिर उसको ट्रस्ट करती तो शायद इतने मोड़ ना पड़ने पड़ते। मगर सीखने का एक अपना समय है और समझने का भी एक अपना समय ही है। हम उस समय तक चलकर, बहुत बखूबी चलकर उस समय तक पहुंच जाते हैं और हमारी खिड़कियां खुल जाती हैं। भागते 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 जिंदगी का सफर तो पूरा होता चला जाता है, मगर वो सफर मैंने पूरा कैसे किया, किस तरीके से किया, कितना खुशी से भरकर किया, ये सिवाय मेरे कौन जाने। डिग्री तो बहुत लोग ले लेते हैं, मैं भी उनमें से ही, मगर वो डिग्री ली कैसे,
यूनिवर्सिटी में पैसे देकर, मेहनत करके, चीटिंग करके, दिमाग खराब करके या कैसे, उसकी सच्चाई सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इस जिंदगी में डिग्रियां हमें बहुत उम्दा और अनमोल दिखाई देती हैं, वो क्या वाकई में इतनी अनमोल है? आज ये प्रश्न मेरे अंदर बहुत बार आता जाता रहता है। मगर शायद यहाँ तक पहुंचने के लिए भी उन डिग्रियों की जरूरत थी। उन डिग्रियों ने मुझे तपना सिखाया और कहते हैं ना कि सोना घड़ने के लिए उसे तपश पर रखते हैं, गर्म करते हैं, तब ढलने पर आता है। शायद इन सब मोड़ों ने मुझे उस तपश में रहना सिखाया, मुझे ढलना सिखाया। और जब जब मैं ढलती गई तो जो खूबसूरत सी मूरत मेरे अंदर, मेरी सच्चाई बैठी थी, वो बाहर मुझे आती दिखने लगी। और वो सच्चाई ये थी कि मुझे मुझसे भागने की आदत है। मुझे मुझसे ही भागने की आदत है, और ये आदत अब कमबख्त बहुत पुरानी हो गई। और जब जब मैं अपने को अपने साथ वक्त बिताने के लिए समा पक्का करती हूँ, बिना किसी चीज की सपोर्ट लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ, ना कोई गैजेट, ना कोई म्यूजिक, ना कोई इंसान, सिर्फ मैं, मेरे साथ। तो बहुत सारे खौफनाक भी विचार आते हैं, मगर अगर मुझे ये पता रहे कि ये खौफनाक विचार भी मेरे अंदर बहुत कुछ घुट कर रखे हुए हैं, तो मैं उन्हें भी बस जाने दूंगी। पता नहीं कौन से जन्म का खौफ मुझ में भरा हुआ है, और वो आज खौफ का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे अपनी सांसों के साथ जुड़ना, और बाकी का काम मेरी सांसों का है। वो सब खौफ, वो सब खतरा, वो सब फिक्र, वो सब परेशानियां, वो सब शारीरिक मानसिक परेशानियां, सब मेरी सांसें ले लेंगी। मुझे बहुत गहराई से रिहाई दे देंगे। मुझे बहुत गहराई से रिहाई दे देंगे। और जितनी मैं रिहाई
मैं मस्त और मदहोश होती जाती हूँ, उतना ही अपने आईने को साफ पाती हूँ। और इस आईने में धुंधलापन इतना कम दिखना शुरू हो जाता है कि बस मेरी आंखों से अमृत भरे आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। मुझे ना पता था कि ये रिहाई के लिए मैं कितनी ज्यादा उत्सुक हूँ। छोटी सी समझ से बहुत बड़ा ख्वाब देख रही थी। समझ इतनी छोटी कि शायद चींटी की भी ज्यादा हो, मगर ख्वाब इतना बड़ा। अपने को अपने ही बनाए हुए जंजालों से निवारण करने का ख्वाब। इतने सारे जंजाल मैंने कैसे बुन लिए, कहाँ से बुन लिए, कहाँ से उठा लिए और अपने बन लिए। और इतने जंजाल जो इतनी बहुत ही टाइटली मैंने बुने, उस टाइटनेस में मैं इतना घुट गई कि बस मेरी बस हो गई। उस बस ने मुझे किसी और बस पर चढ़ा दिया। उस मेरी बस होने ने मुझे और बहुत खूबसूरत सी बस पर मुझे गिरते पड़ते संभलते जिंदगी का कुछ और समझ में आना शुरू हो गया। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मेरा नजरिया शायद बहुत अलग था। आज जब ऊपर वाले के हाथों को थामा तो उसने नजरिया ही कम वक्त बदल दिया। इतना क्या आसान था, अगर मुझे पता होता कि उसके हाथ थामने की जरूरत थी। बस बस अगर उसके हाथ को थाम के रखने में ही मुझे एक्सपर्टीज डेवलप करनी है, और उसका जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है अपने से कनेक्ट करना, अपनी सच्चाई से कनेक्ट करना। ये दुनिया आपको बहुत सारे चक्रव्यूह में डालने के लिए ही है, और हमने ये दुनिया खुद से चुनी है। ये चक्रव्यूह हमेशा चक्रों में ही रखता है। मगर अगर मैं इस चीज का मुझे पक्का हो कि मुझे इस चक्कर में डलना ही नहीं, मुझे अपने साथ एक ऐसी मोहब्बत और एक ऐसा थंबा अपने साथ क्रिएट करना है जो डगमगाए नहीं। तो मुझे इस चक्रव्यूह में कभी आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे सुबह शाम दोपहर इन सांसों से जुड़ने का एक कॉन्शियस एफर्ट करना
शायद खाना खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब जब मैं करती जाती हूँ मुझे लगता है कि मैंने रिहाई पाई है। मेरे जहन में और खुशी आई है। मेरे गुलिस्तान में और खुशी आई है। ये सांसें बहुत ही खूबसूरत हैं। मुझे मुझसे मिला देती हैं और मुझे मेरी सच्चाई से मिला देती हैं। बस इतना ही काम है मेरा इस दुनिया में। काम है मेरा इस दुनिया में। आइए सांसों के साथ कुछ अटखेलियां करें और कुछ समा बांधें और इनके साथ कुछ और वक्त सिर्फ आप और आपकी सांसें कुछ और वक्त दें। और जब जब आप ज्यादा से ज्यादा वक्त देना शुरू करेंगे और बंद करने की जरूरत नहीं है। सुबह शाम मैं आंखें बंद करके अपने साथ समा बिताती हूँ तो बाकी का दिन भी मैं काम करते हुए उनके साथ बार बार जुड़ सकती हूँ। और इस जुड़ने से ही आप अपने साथ और इस खूबसूरत जिंदगी के साथ जुड़े रहेंगे। इसीलिए ही ऊपर वाले ने हमें प्रदान किया है। जब भी चाहें आप वापस आ सकते हैं। So I hope you've had a good time connecting with yourself. Yeah. Thank you, my beautiful friends, for this beautiful, amazing afternoon. Yeah, and I think tomorrow, I don't know how many of you are on Instagram, yeah, and how many of you are on Instagram. So if you're not, we shall come up live tomorrow evening on Instagram with a live meditation there in the evening. I shall keep you posted. Yeah, and जो morning 12 noon होता है वो तो है ही है, but I shall definitely put the right time on the group. Yeah, and I hope all of you are on group. I think all of you are. Yeah.
So let's make Instagram alive too. Yeah, and let's see who desires to be on the live meditation. And let's see you there. Yeah. So I hope there was some degree of clarity to today's call, and we shall definitely take up Manisha's question as a part 2 of this call tomorrow. Yeah, 12 noon. So thank you so much, guys. Thank you Thank so you, much. Malvika. Thank you. Thank Thank you very much. Thank you so much, Malvika. Malvika. Thank you.